Hello friends, I am Priyanka here. Today we will discuss about type of mirror. There are two type of mirror. First is plane mirror and then second is spherical mirror. First of all we discuss about plane mirror. What is plane mirror? Plane reflecting surface. क्या होता है प्लेन मिरर? जिसका क्या होता है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये कभी पॉलिश सरफेस है, क्या होता है हमारा शाइनिंग सरफेस होता है. A plane mirror is a mirror with a flat reflecting surface. For light ray striking a plane mirror, the angle of reflection equal to angle of incident. क्या होता है, जैसे प्रीवियस क्लास में भी हम पढ़ के आए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये कोई भी हमारा प्लेन है, क्या रे ऑफ लाइट यहाँ पे आएगी, एक पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करेगी एंड देन क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी. उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड देन क्या होता है इसके अंदर, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट के. एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. जो एंगल ऑफ इंसिडेंट को हमने डिनोट कर दिया आई को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट कर दिया हमने आर से. ठीक है, इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर. व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्फेरिकल जिसकी शेप कैसी होती है, स्फीयर की तरह होती है. ए प्लेन मिरर इज ए मिरर. A spherical mirror is a mirror which has the shape of a piece cut of a spherical surface. क्या होता है, जिसकी शेप कैसी होती है, स्फीयर की तरह होती है. शेप ऑफ ए पीस कट आउट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज नोन एज द स्फेरिकल मिरर. देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर. फर्स्ट इज हमारे पास है कनकेव मिरर एंड देन सेकेंड इज कन्वेक्स मिरर. इन कनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. इसके अंदर क्या होता है, रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है और जो रिफ्लेक्शन इसमें के अंदर अकर होगा वो थ्रू द इनर सरफेस. ये इनर सरफेस होता है ना, यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन अकर्स होगा कनकेव मिरर के अंदर. और कनकेव मिरर क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. और इसके अंदर जो हमारी इमेज बनती है वो इमेज कैसी बनती है, रियल एंड वर्चुअल. कैसी बनेगी, रियल एंड वर्चुअल. नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. इसके अंदर क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट हमारी आएगी फिर क्या होता है, वो मतलब क्या होता है, वो डाइवर्स हो जाएगी. डाइवर्जिंग का मतलब दूर दूर फैला देना रेज ऑफ लाइट को. और इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन अकर्स होता है वो क्या करता है, आउटर एरिया के अंदर होता है. क्या है, रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू द आउटर सरफेस. जो आउटर सरफेस होता है ना, इसमें आउटर सरफेस में होता है, इसके अंदर है इनर सरफेस में होता है. और इसके अंदर जो इमेज बनती है, ऑलवेज इमेज बनती है वर्चुअल. इसमें क्या बनती है, रियल एंड वर्चुअल. ठीक है, इट इज़ क्लियर हो गया. तो हमारा क्या होगा, टाइप ऑफ मिरर्स. टू टाइप ऑफ मिरर हो गए, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर के भी टू टाइप्स हो गए, कनकेव मिरर एंड देन कन्वेक्स मिरर. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे रियल एंड वर्चुअल इमेज इन द नेक्स्ट टॉपिक. सो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज diagram of concave and convex mirror. This is the diagram for concave mirror, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. दिस इज द डायग्राम फॉर कन्वेक्स मिरर, जिसको हम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. नाउ यूजेस ऑफ concave and convex mirror. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट concave mirror. concave mirror यूज फॉर मैनी पर्पजेज के लिए, अलग अलग पर्पज के लिए हम इसका यूज करते हैं. यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग concave mirror फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर्स, नोज. क्या डॉक्टर्स को आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कनकेव मिरर का फॉर एग्जामिन करने के लिए, हम आई और हमारे नोज वगैरह को देखने के लिए. ऑल्सो वी सी दैट जो हमारा कनकेव मिरर आल्सो कहाँ यूज़ करते हैं, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन इलाज इमेज ऑफ ओवर टीथ. क्या करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कनकेव मिरर का क्या करने के लिए, जो हमारे टीथ की इमेज को बड़ा करके देखने के लिए. द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेज, हेडलाइट्स ऑफ कार एंड स्कूटर आर कनकेव इन शेप. जो क्या होते हैं, हेडलाइट्स ऑफ कार होती है, जो स्कूटर्स होती है उनकी शेप भी कैसी होती है, कनकेव मिरर जैसी ही. नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स लाइक कार्स, ट्रक्स एंड बसेस टू सी द ट्रैफिक एट द रियर साइड. क्या करते हैं इसके अंदर, जो हमारी जो कार्स वगैरह के अंदर जो रियर व्यू मिरर लगा होता है, जो उस मिरर में कौन सा मिरर यूज़ होता है, कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है. क्या देखने के लिए, जो हमारे बैक साइड में ट्रैफिक को देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर का.
इसका आल्सो हम यूज़ करते हैं सन ग्लासेस के अंदर एंड मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर। मैग्नीफाइंग ग्लास इट मीन्स यूज फॉर मेकिंग थिंग्स लुक बिगर देन दे आर, मतलब जैसे जो चीज़ एक्चुअल में हमें दिख रही है उसको और बड़ा करके देखने के लिए, जैसे जो दिख रही है उससे बड़ा करके देखते हैं हम विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। सो क्लियर हो गया। कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर में, सन ग्लासेस में, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, और जो कनकेव का यूज़ करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, हमारे जो डेंटिस्ट होते हैं, और हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड क्या है जो कार्स होती हैं, जो स्कूटर्स होते हैं, उनकी शेप भी कैसी होती है, कनकेव होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक। In this video, my aim is to give you the basic understanding of the terms virtual and real images. It's a slightly long video, but it'll be one of the most interesting ones too. I'm sure you'll enjoy it. What you see on your screen is a mirror. It has this plane and smooth reflecting surface on one side. It's called a plane mirror because its reflecting surface is flat. What other types of mirrors have you seen? Have you seen this type of mirror? Well, you must have seen it on the stand of your bathroom or maybe hung up there on a wall. This is not a plane mirror. Try to move your hands over the surface and you will notice it. This is called spherical mirror, or more precisely, spherical concave mirror. It is curved inwards. It is kept there as we use it mostly when we are shaving. Now the obvious question that must be coming to your mind is, why do we use concave mirror for shaving instead of a plane mirror? For the answer to this question, you have to wait for our future videos. For now, we will be concentrating on the plane mirror only. So let's consider this plane mirror again. When we stand in front of a mirror, we see an image of ourselves in the mirror. Nothing surprising there. Why are we able to see our image? Yes, it's due to the reflection of light. In fact, it's due to multiple reflections of light rays. How? The light rays from the source are first incident on our body. They bounce off from our body and fall on the surface of the mirror and again gets reflected from there. This reflected light then reaches our eyes and we see our image. So what does this tell us? Yes, this tells us that a light ray can get reflected multiple times. The same thing happens for every other non-luminous object as well. If you remember, my initial goal was to explain what virtual and real images are. Let me ask you a question. This image that you see here, is it a real image or a virtual one? This image is a virtual image. In order to explain what a virtual image is, let's first simplify this image. Let's represent this boy with an arrow pointing up. And here is our plane mirror. You can assume the top of the arrow to be the top of the head of a boy. Now, where is the image of the boy formed? When we see the image in the mirror, it seems to us that the image is formed somewhere behind the mirror. But there is nothing behind the mirror, right? For us, the light rays seem to come from the location present behind the mirror. For instance, consider a few light rays emerging from top of the arrow. All these rays are incident on the mirror and get reflected back. Yes, all the reflected rays will follow the laws of reflection. You see that all the reflected rays are moving away from each other, that is, they are diverging. But we know that the image is formed somewhere behind the mirror. So let me extend these reflected rays backwards and see what happens. We see that they meet at this point behind the mirror. And to us, this is where the top of the image appears to be. When we look at this point, it appears to us that all the light rays are diverging from this point. But in reality, there are no light rays behind the mirror. This being a smooth and shiny surface reflects most of the light back and almost no light reaches behind. But yet, we have the perception that the light rays are coming from the point behind. So we just consider the top of the arrow here. We can do something similar for the remaining points on the object to get the complete image. So we say that the image formed here is virtual, or in other words, not real.
You can think of a virtual image as an image which appears to be formed in a position somewhere behind the mirror, but in reality, it isn't there. A virtual image is formed when the light rays diverge after reflection from the mirror. Every plane mirror forms a virtual image. This is the first characteristic of the images formed by plane mirrors. Images formed by plane mirrors are virtual and not real. So what is the real image then, and how are they formed? Let's replace this plane mirror with a spherical concave mirror. Why? It's because real images can be formed by concave mirrors. Let's consider the light rays from the same point of the object incident on the mirror. We see that after reflection, each ray is traveling in a certain direction. Note that here as well, each ray obeys the law of reflection. What difference did you notice here compared to the plane mirror reflection? In the previous case, all the reflected rays were diverging. Yes, here all the reflected rays after reflection are intersecting each other at this point, or we can say that they are converging at this point. And the image of the top of the arrow is formed at this point. And we can do something similar for the remaining points of the object too. We get this image. This is called a real image. It is the image formed when light rays converge after reflection from the surface. One important thing we need to know is that real images formed by concave mirrors are always inverted. We will learn more about this in the future videos. You see that in this case, the image is formed on the same side of the mirror as the object is. Real images are always formed on the same side as that of the object, and light rays do reach this position. When we look at the real image formed by a concave mirror, it also seems to us that the light rays are diverging. But here the rays actually are diverging from a point in front of a mirror. Whereas in the case of a plane mirror, it appears to us that the rays were diverging from the point behind the mirror. So did you understand the difference between a virtual image and a real image? When we look at a virtual image, it appears to us that the light rays are diverging from a point somewhere behind the mirror, but in reality they aren't, as no light reaches behind the mirror. It's only our perception. And in the case of a real image, the light rays are actually diverging from the point present on the same side of the mirror. In reality, light rays indeed reach this point. Hence, we call it a real image. I mentioned earlier that concave mirrors form real images. In fact, they form both real and virtual images. And what does it depend on? It depends on the distance of the object from the mirror. We will learn more about the real images formed by concave mirrors in our future videos. First, let's go back to our plane mirrors. This is only one of the characteristics of an image formed by a plane mirror. We will see more in our next video.